Assalamu alaikum, Hina. Walaikum assalam. How are you? Very well. MashaAllah, you're looking amazing in green. Thank you so much. You're catching up the vibe because it's Independence Azadi Mubarak to all of you. आपको भी Happy Independence, 75th Independence Day. थैंक यू सो मच। शुक्र है आप आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम अभी भी गुलाम हैं। तो हम तो आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। Yeah, and we are happy. वी आर वेरी हैप्पी। इंडिपेंडेंस डे है, हमारे शोधा की कुर्बानियाँ हैं इस दिन पे। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क है, तो इसकी खुशी हम मना रहे हैं। Yes, true. What is independence for you, as a woman, as a mother, and as a strong-headed person? सबसे पहले तो मैं two aspects बताऊंगी। First of all, as a Pakistani for me, independence is जो अब मैं देखती हूँ जैसे कश्मीर में जिस तरह राइट्स ऑप्रेस होती है लोगों की, या फ़लस्तीन में। सो मैं अब देखती हूँ कि हमारे लिए 75 years of independence, एक आज़ाद मुल्क जिसकी अपनी फ़ौज है, जिसकी अपने सारे अदारे हैं, उसको हमें किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। बिकॉज़ जो लोग आज़ाद नहीं हैं उनके लिए इट्स सच ए डिफ़िकल्ट टाइम। और ये बात कि although I believe that ये एक ऐसा दिन है जिस पे हमें सियासी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए हमारे मुल्क के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जनरेशन को इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में ना डालें। हम एक आज़ाद मुल्क है, हमारे बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए, तो हम आज़ादी मनाएं और उनको सही मैसेज दें। So as a individual, the ability to live the life the way I want, although देखिए certain rules होते हैं। For me, there are certain rules in the Quran which put a square around me. As long as I'm following those rules, as long as I'm following the rules in the Constitution of Pakistan, I should have the independence to live my life the way I want. As a mother, I am training my son towards how he can be an independent boy. For example, the right to choose the career I want, the right to choose the person I want to be with, the right to choose my education, but obviously living in the certain principles, living under the Constitution, living under the guiding principles of Islam. I should be able to choose what I want. And as Pakistani, the ability to choose the leader I want, ability to choose the party I want to vote for, and not to be bullied by a certain class. As you said, freedom is very important. ना सिर्फ इसके लिए कि हम because we are a generation that is born in an independent country, right? So we don't understand कि जितना खून पसीना, जितनी मेहनत, जितनी struggle इस आज़ादी को लेने में गई है हमारे आबा व अजदाद की, जो हमारे बड़े हैं। As a strong woman yourself, what advice would you give to young women जो yes उनके पास ये inspiration है, वो आपको देख के is your inspirational person yourself, वो आपको देख के they want to be in politics or any field, उनको क्या advice देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो अगर हम पाकिस्तान की स्ट्रगल को देखें when Pakistan was formed, because I personally believe कि अगर आप अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करें, आप पढ़ें, जैसे कहते हैं ना, दुख और भी हैं ज़ुबाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये नूरजहान का गाना है और फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री है। और मैं जब मैडम नूरजहान के गाने सुनती हूँ और सारे जो वॉर पे और वो जो उन्होंने स्पेशली शोधा के लिए लिखे हैं, तो इफ़ वी कनेक्ट बैक टू आवर हिस्ट्री तो वी कैन रीलिव द स्ट्रगल इन विच पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड। जिस तरह आपने ये मुझे कहा कि मैं अपने आप को तो अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं समझती, लेकिन आई लुक अप टू, हम आपको समझते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि आई लुक अप टू for example, Fatima Jinnah, जिन्होंने, she was a dentist, if you would know. Yeah. She gave up her career. She gave up, you know, she didn't get married, for example. She was there with her brother, Qaid-e-Azam, to support
as a woman in politics at that time. So she has set an example for other women. So मैं वही कह रही हूँ, अगर हम पाकिस्तान की सपोज हिस्ट्री भी देखें, इसी तरह अगर हम बेनज़ीर भुट्टो को देखें, किस तरह she came as the शहीद बेनज़ीर भुट्टो as the first female prime minister in Islamic world, in the Islamic world. And similarly, जिस तरह मैं फातिमा जिन्ना की आपको स्ट्रगल की बता रही हूँ, how she stood with her brother throughout. इसी तरह अगर हम मरियम नवाज शरीफ की स्ट्रगल देखें, that she stood with her father throughout as a symbol of resistance and defiance. So I think those are the women. Actually, Asma Jahangir, the way she, raised her voice for democracy. We have a lot of examples of strong women. I look up to them. And I think हमारा माशरा is एक ऐसा माशरा है जिसको अगर for the Western world की बात करें, वहाँ में देखते हैं कि they are not giving rights to women, and this कुछ हद तक true भी है. But we are the society that are giving birth to many inspirational women and empowered women. बिल्कुल, I think कि और मैं एक और कहूँगी कि वो वाली ख़वातीन जो एक पुअर मिडिल क्लास से भी बिलोंग करती हैं, आई थिंक वो जितनी स्ट्रॉन्ग है ना, जिस तरह वो अपने बच्चे भी पाल रही हैं, वो फाइनेंशियली अपने आप को कोशिश करती हैं, इंडिपेंडेंट भी हों, स्ट्रगल कर रही हैं, आई थिंक वो एंड द वे दे मल्टीटास्क, दे रन देयर फैमिलीज, देयर स्ट्रॉन्ग मदर्स, they raise good children. I think they are the real women of strength. बिल्कुल आप ये कह रही हैं, you're right. I think इसमें कि there are women on one side. For example, हम देखें जैसे शमीन उबैद चुनोय जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, and she also won an Oscar for that. But on the other side, we do have examples of women who are harassed. There is domestic violence. There is so ये denial तो नहीं है, लेकिन हमें we need to keep, और मेरा reason to come in politics was also to stand up for such women, especially because when I was working with home-based workers, when I was doing my fashion business, so I was working with home-based workers, तो मैंने देखा कि उनकी एक basic salary भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि जैसे मेरी जैसे ख़वातीन को आना चाहिए politics में, to change legislation, to change those kind of laws. So हमने अल्हम्दुलिल्लाह होम बेस्ड वर्कर्स के लिए भी कानून पास कराया, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी कराया. सो मेरा सिंगल स्टेप है, लेकिन आई थिंक अभी भी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी राइट्स के लिए हमें बिल्कुल खड़ा होना है. आपकी को आवाज़ बननी है. देखिए, अगर हम अपना रिलीजन ही पढ़ लेना, तो हमारे रिलीजन में ख़वातीन को बहुत राइट्स दी गई है. अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन सही तरह पढ़ लें तो हमारी ख़वातीन को, हमारी माइनॉरिटीज़ को राइट्स दी गई हैं. तो आई थिंक जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, इफ़ वी गो बैक ऑन आवर बेसिक्स एंड वी रीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी रीड द प्रिंसिपल्स व्हिच आर गिवन इन द कुरान, आई थिंक वी विल बी गिविंग राइट्स टू आवर women. True. So ये थोड़ी सी हम serious very serious stuff. Which is not my style at all. So that there is the fun side of it. 14 August, early memories क्या है आपकी जब when you were kids, and I know Amna was there, your best friend and your sister. So क्या तैयारियाँ, क्या मेहंदी शेंदी लगाए, मतलब how was it all? For me, जिस तरह ईद की सेलिब्रेशन होती है ना, उसी तरह 14th August की सेलिब्रेशन हमेशा से होती थी. And I used to put mehndi on my hands, go get flags. अभी भी जैसे मुझे इतनी मतलब I'll pick my son up and we'll go on a drive, we'll buy the flags, and I think 14 अगस्त की एक जैसे कहते हैं चांद-रात होती है 13th को, और मुझे याद है कि मैं ना फैमिली के साथ पहले like couple of years back, many years back, not couple, I think 10-15 years back, we used to go to Murray. और उधर मॉल रोड पे जाना और वो झंडे लेके and then Patriota with chairlift and getting your face painted. So I think today also I'm thinking to get a mehndi of Chand Sitara. And you have to send and I will, because I think this is the way we should celebrate our country. Freedom. We are celebrating independence. We're celebrating Pakistan. We are celebrating freedom. Exactly. And फिर 12 बजे the fireworks. That's a really I usually मेरी दो New Year's होते हैं, एक 14 August को and then the
actual New Year because fireworks really fast. मेरे लिए तो मैं अब सोच रही थी कि मैंने I'm gonna pick my son up and maybe I'll go watch Quaid-e-Azam or yeah I would you know कुछ जैसे नहीं होता street food like golgappas or something and get the mehndi done on a stall and buy the flags and go get my face painted. You know, we need to be kids sometime. Like when such you know. We're all kids Yeah. at heart. I Yeah. think when we start hanging out with kids now, we Yeah. see that you know they have no inhibitions. They want to enjoy life, and I think we should learn from हाँ, और them. कोई वो फोकस भी नहीं होती कि कौन हमें देख रहा है क्या करेगा क्या नहीं because they don't give up anything. Okay. Looking back at the story of Pakistan and the independence and the movement of freedom and everything, apart from Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah because he's the founder, he's one icon and we respect and love him. But which other characters, which other personalities do you look up to? And you know, you see their struggle and you know they really motivates you and inspire you. देखिए, I have been an avid reader, so I have read a lot of about Nelson Mandela, his struggle. मैं अभी out of Pakistan आपको बता रही हूँ कि Nelson Mandela, his struggle, you know the way he spent so much time in jail, standing out for apartheid. So I think कि these people give you this source of inspiration. और फिर obviously Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah और उनकी जितनी struggle थी, the way you know he was an all-rounded personality. You know the way पहले उन्होंने he started working with you know towards a secular Pakistan. He talked about minorities, he talked about women being side by side. He actually told us what the real azadi is. Yeah. और मैं इसलिए अभी से बात शुरू हुई और उनके साथ स्पेशली फातिमा जिन्ना जिस तरह उन्होंने कायद-ए-आज़म की स्ट्रगल में साथ दिया. तो we have these role models. And this is a lot of women that Mushana with all the men. That's really a good example. मैं वही कह रही हूँ, that's still an inspiration for us that we need politically motivated, progressive women. इसीलिए जब हमने वो बात की तो मैंने आपको जैसे कहा कि आप देखें कि फातिमा अली जिन्ना हो गई, आपने बेनज़ीर भुट्टो देखी, आपने कुलसूम नवाज साहिबा देखी कि उन्होंने किस तरह डेमोक्रेसी के लिए किया, इस तरह मरियम नवाज साहिबा देखी. और अगर हम दुनिया में भी देखते हैं तो women leaders जसिंडा आर्डन जैसी is coming forward. So I think these women are setting excellent examples for us. True, very true. अच्छा, आपका most fun 14 August मतलब कब गुजरा and you share the story. मेरा आपने पूरा मजा एक unforgettable होता है ना कि वो नहीं भूलता किसी को भी. That I remember when I was very young, I was like 5-6 years old and we used to live in Mazang. अच्छा. So wahan there was my dada's house and you know all of my cousins came and we were given a yes day in which we could do anything. So Nice. we got ready, wore green, वो लहंगास नहीं होता, and then we went, वो एक दुकान है वहाँ से we bought the candies, went for golgappas, then we went to Joyland. So I can't imagine you doing all this stuff. like, you know, I know. पूरा दिन, you know, it was the उस time पे तो that was the biggest, you know, कहते ना अयाशी वाला plan. So that was like आपने जाके, you know, we were not allowed to sometimes have street food, but जाना और चाट भी खा ली, इमलीस खरीदने हैं, and you know, getting मेहंदी done, face painting, all of that. So I think those are the memories that are still with me. Okay, as your party is in the federal government right now, and unfortunately not the provincial one. Very unfortunate. How can we make Pakistan the Pakistan that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah imagined? जब मैं स्कूल में होती थी ना, I was in convent of Jesus and Mary. So there were 3 principles we were taught. There were actually 3-4 houses. जिसमें था unity, there was faith, there was discipline, and services. ये तीनों कायद-ए-आज़म के main principles अगर हम देखें. Unity, I think if we want to go back to the Pakistan of the Qaid, we need to be united as people, as Pakistanis. We need to show right now we are not tolerance.
we need to show tolerance. We need to show a united Pakistan image across the world. If we have a united image, only then we will be able to have good diplomatic relationship. We'll only then be able to have a good diplomacy, good economics. Then there's unity, there's faith, and there's discipline. Discipline to 100% I endorse. Your hard work, persistence, and you know, all these things, and faith. You know, जिसे कहते हैं faith, the belief of what can be done. I think those things are the most important. और ये आपने कहा कि फेडरल की बात की, बिल्कुल 75 years हमारे कंप्लीट हुए हैं. बड़ी आपने देखा होगा कि कल पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, there were kids in the assembly, there were minorities in the assembly, there were women in the assembly, and there was the first time in the history of Pakistan they were able to come and they were able to voice what they felt. And I think कि अगर हम उनकी बात, जो उन लोगों ने pointers raise की हैं, अगर हम उस पे अमल दरामद करते हैं, अगर हम उनकी बात सुनते हैं, तो I think we can go towards a more, you know, towards Pakistan, which actually कायदे-आज़म का dream था. Prosperous Pakistan. The prosperous Pakistan. And बच्चे तो होते ही मासूम है, you know, बच्चे तो गैर सियासी होते हैं. नहीं, बच्चे गैर सियासी, बिल्कुल सही बात है, होते हैं, और बच्चों की एडवाइस भी मानना जो होती है ना, वो. I saw this clip जहाँ बच्चे ने कहा कि, you know, हमारे playgrounds पे अब buildings बन रही है, क्यों बन रही है? That was such a valid question. But that is such a valid question. All of us need to ask. बिल्कुल ठीक. And you know, अच्छी बात है कि I think this practice should be once in a year. You know, every 14th August they should be able to come in the assembly, and minorities, also your kids, your women, people from all the different sectors should be come and be able to raise what they actually feel in the assembly. Why not? It's a platform for them. Thank you, Hina, for your time. Thank you so much. I have bothered you, but I'm sorry. But it was lovely talking to you. And Happy Independence Day. बहुत आज़ादी मुबारक हो. और मैं एक मैसेज देना चाहूँगी अपनी यूथ के लिए कि पाकिस्तान आज़ाद है. किसी भी फितना या किसी भी बंदे के पीछे लग के ये ना समझे कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है. ये जानबूझ के अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए मुल्क में इंतशार और फितना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. हम आज़ाद मुल्क हैं, एंड वी आर प्राउड और आज़ादी अपनी अफवाज पाकिस्तान जो हमारी सरहदों को प्रोटेक्ट करते हैं, और पाकिस्तान एज अ कंट्री. Thank you so much. Thank you. It was lovely talking to you.